Hello, everyone. So, once again, it is Wednesday, and I am with you. I'm Shalini Beriwal. People who do not know me, I have a brand called Magnificence, and we design beautiful stuff there. Each design starts with a story, each design starts with a human element to it. And I always say that designs at Magnificence speaks. They speak to you, they have a story, they have a language of their own. तो जो लोग मुझे नहीं जानते, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन ताकि एक जान पहचान हो जाए. आई एम शालिनी बेरीवाल. So I started working at the age of 42 and started with Magnificence, designing some gifting solutions and all working with Indian artisans and giving them a very, very different look. तो मैं कुछ कोशिश नहीं करती थी, it happens on its own. तो आज, and later on now I become a coach, I train professional gift packers, and I trained women who are into businesses, working from home, growing their businesses, hand holding them. पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कि डिज़ाइन किस तरह से एक कोई छोटी सी चीज़ से शुरू हो जाता है जो आप कभी सोचते नहीं है. तो एंटवाइन जो डिज़ाइन इस वक्त मैग्निफिसेंस इंस्टाग्राम पे है, मैं बॉम्बे में थी एंड आई बॉट this small tiny flower. Can you see this small tiny flower? So we have Madhura Pawar here, we have Geeta Mata here, so we have a lot of people. So do you see these tiny flowers? If you see, please say yes, right? तो ये मैं मार्केट में घूम रही थी, मैंने ये फूलों को देखा. I just loved the way the distress color was there and the way the light pink and the brown. So I bought a lot of them and came back to Delhi. अब ये फूलों का कलर थोड़ा डल सा है. बाजार गए तो कोई भी कपड़ा मैच नहीं कर रहा, कोई भी चीज मैच नहीं कर रहा. एंड देन आई हैपन टू गो टू देवनगर एंड कैन यू सी राइट लाइक दिस हाउ वेल दिस फैब्रिक इज मैचिंग विद दीज फ्लावर्स, राइट. तो ये कपड़ा और ये फूल हम खरीद के लाए. आई जस्ट हैव दिस बॉक्स हियर सो दैट सो इफ यू सी, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी माय कर्सर. मीता, कैन यू सी माय कर्सर हियर? मधुरा, if I am doing it here. Jeet says sound is not clear, but I can't help. तो ये कपड़ा हम खरीद के लाए. ये fabric, it's a jute silk fabric which we bought from Devnagar. Now these flowers, these tiny you see here, and this fabric was so perfectly gelling, पर डल था. Means वेडिंग इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी जान चाहिए थी, थोड़ा सा कुछ चाहिए था. Almost for 1.5 महीने तक we were roaming about. I was taking this flower and this fabric का swatch and going to all the virtual places कि क्या मिलेगा, and I was not getting anything. Then I have a friend, Preeti, and she exports embroidered shoes and all. Then these small, these you see these stones here. So I'll just have myself like this. Yeah. So ये वाले जो स्टोन है, these stones, ये वाले. She told me कि एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसे पुडगिल बोलते हैं. So it's a kind of a small town. I won't even call it a town at that time. कि पुडगिल के अंदर एक तो घुंघरू बहुत अच्छा बनता है. वहां पर ये stones को mold करके दे देते हैं. She is using them on her shoes and all. So she gave me the number of a कारीगर. I sent this flower to that कारीगर and told him, क्या आप हमारे लिए अलग अलग साइज के स्टोन बना सकते हैं, इसके पत्थर बना सकते हैं कुछ. और उसने ये जो आप बॉक्स में देख रहे हैं, ओवल, स्क्वायर, सारे स्टोन्स लगे हुए, ऑल दीज स्टोन्स हियर. आई डोंट नो वेदर यू कैन सी माय कर्सर, आई एम नॉट वेरी श्योर. तो ये स्टोन्स उन्होंने बना के भेजे. सो नाउ आई हैड दिस टाइनी फ्लावर्स, आई हैड द परफेक्ट फैब्रिक, I had beautiful stone, but still together they did not say celebration. Okay, Madhura, you cannot see my cursor, doesn't matter. तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ. So I'm talking about these stones, these ones, yeah. तो फिर अब मेरे पास ये तीनों चीजें तो थी, लेकिन वेडिंग इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी जान चाहिए चीजों में, वो कहाँ से लेके आते. Again, I went to these chandelier people and they told me कि they can dye crystal, कि वो मुझे क्रिस्टल को डाई कर सकते हैं. तो ये जितनी भी आप लाइनें देख रहे हैं स्टोन्स की लगी हुई, तो फिर हमने इसको डाई कराया. एंड डोंट मिस आउट
कि ये जो स्टोन के कलर्स हैं ये 2-3 कलर्स के अंदर है, लाइट डार्क स्टोन्स दिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जिसने कलर डाई किया, जो डायर था, ये डिफेक्ट था, लाइक दिस वाज नॉट द राइट कलर विच शुड कम जबकि स्टोन डाई होता है, लेकिन ये हमारे फ्लावर्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। सो वी थॉट विल रिटेन इट। सो दिस वाज वन काइंड ऑफ अ फ्लैट स्टोन। देन वी वेंट फॉर अनदर। फिर जब इकट्ठे रखा उसको तो ये हुआ कि चलिए इसमें कुछ Swarovski डाली जाए ताकि थोड़ी जान आए। Then we got the Swarovski. And can you see the right, that rose flower in the center? That Diamantes flowers? Shikha, Madhura, Geeta ji, can you see that? Center में जो rose का flower है with the pink stone onto it. तो ये flower, अब ये एक brooch था. It was a brooch of a dress. तो I bought this flower because ये मेरे छोटे फूलों से match करता था and gave it to a guy who deals in artificial jewelry. और उसको बोला कि इसको बना के दे ताकि ये इसमें लग जाए। एंड देन दिस फ्लावर केम। नाउ केम द थिंग कि हाउ डू वी मेक इट। कोल लैकर, लाख का काम, ठंडे लाख का जो काम है उससे ये पूरा बॉक्स बना हुआ है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे मैग्निफिसेंस के, यू विल सी अ होल कलेक्शन मेड देयर। देन द थिंग वाज कि ये जो वाटर फ्लोइंग, दैट फ्लूइडिटी ऑफ द डिजाइन, सो आई एम एन एक्वेरियम, आई एम अ वाटर साइन and I love making everything which is in the fluidity. तो जो ये बॉक्स का बीच का फ्रेम आप देख रहे हो, ये बॉक्स में सामान रखने की जगह उतनी ही है। And this center flower is working as a knob. You can pick up and open the box and put the mithai into it. And the side का border है and that make the mithai box to it. When we made this design at that time, a lot of bright colors were in fashion and this earthy look was not so much so. But many of the people just loved all the people who were looking for understated look. For them, it was a perfect match. And then we made envelopes, baskets, and we made, a lot of big baskets to it, trays to create it. And twine means where everything is, intermingled. And you see here if the design is like that. If you want to ask anything regarding the design, material, or kuch bhi, you can ask me. So I can see Shikha, Deepti, Geeta, Smita here. And thank you for being here. You can ask me any of the questions regarding that. जो लाख का काम होता है, ये एक राजस्थान की स्पेशलिटी है, संबट गुजरात में भी होता है। 2 तरह की क्लेस को नीड करके एक आटा सा बनाया जाता है, डो बनाया जाता है। और ये अगर आप देखें तो ये रस्टी सा है, दिस इज लिटिल रस्टी इन कलर। तो अगर व्हाइट, दिस इज व्हाइट, अगर मैंने व्हाइट डो लगाया तो दिस कलर विल नॉट कम। तो वो डो को नीट करके जो दीवारों पे पेंट के कंसंट्रेट आते हैं, दैट इज मिक्स्ड इन द डो, यू नीड इट एंड देन दे रोल इट लाइक अ रोटी, पुट इट ऑन द सरफेस, मेक इट प्लेन एंड हाथ पे नहीं चिपके उसके लिए दे यूज ऑयल, दे यूज पाउडर। एंड वी हैड artistic कारीगर्स लाइक सुब्बुल, लाइक Rizbul. And I still remember ये जब हमने डिजाइन बनाया था, I was working from home and they will sit in my drawing room and हम लोगों ने बेड नहीं लगाया घर में because it was difficult to work. We were in a 3-bedroom apartment. हम सारा सामान हटा देते और ये 10 जनों की एक फैमिली थी, they'll come and I'll put all the main stones and they will fill up with the barik stone. So each box which were made, each basket which was made, it was great fun. Imagine एक पॉश लोकेलिटी में एक घर है और वहां पे कुछ कारीगर और हम लोग बैठे स्टोन लगा रहे हैं, किचन में से कुछ पराठे बन के आ रहे हैं। They enjoyed working because they had never worked like this. They had worked from the dingy store. So if you see here, isn't it look like a beautiful woman with a very like a woman of substance? बहुत सारा प्यार है इसमें उन कारीगरों का, बहुत सारा strategically put stones, the color, the combination. Yes, Smita, it was a lot of fun and you'll be surprised. Nobody before us had treated them with the home cooked food. They will sit, I will sit on the floor with them and eat. My husband would be there, my children would be there. Many a time they call me Didi and they used to say कि दीदी ऐसा हमने आज तक कभी नहीं देखा. But it was great fun. It was great fun. And Geeta says it's beautiful and everything used to get
beautiful output seems to be costly. How do you get to sell them? So Geeta, number one, costly or not costly? So I'll just have a single this thing. So I have a clientele who are very design conscious. They are very, very design conscious. They like to buy good stuff. So number one, if you really want to, it's not a matter of selling expensive. It is a matter that your designs are such that they can sell expensive, right? तो अगर आपके डिजाइन ऐसे हैं where there is a value, where there's a customer see the value, then they pay you. अगर आपका डिजाइन कितना भी महंगा बना हुआ हो, लेकिन अगर कस्टमर उसमें वैल्यू नहीं देखेगा तो दे विल नॉट पे यू एनीथिंग. तो आपको ये देखना है कि आपका जो डिजाइन है वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है कि नहीं करता है, वो कितना एक्सक्लूसिव है, उसको बनाना कितना आसान है, एंड इज इट यूनिक, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम अपने माइंड से ये निकाल दें कि मेरा डिजाइन महंगा है या मेरा डिजाइन सस्ता बन रहा है, एंड यू डिजाइन टू डिजाइन, ओनली डिजाइन टू डिजाइन, देन यू गिव योर 100%, देन द क्रिएटिविटी कम्स. और अगर हम उस स्ट्रेस में डिजाइन करते हैं कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कस्टमर पैसे देगा कि नहीं देगा, देन हमेशा एक कंस्ट्रेंट डिजाइन होता है. और इसमें तो बहुत लोगों की आत्मा लगी है. लाख के जो कारीगर हैं वो पहले 6 महीने दिल्ली काम करते थे जब एक्सपोर्ट में EPCH का फेयर हो जाता था. उसके बाद दे यूज्ड टू गो टू द विलेजेस आफ्टर फिनिशिंग द ऑर्डर्स. देन दे स्टार्टेड स्टेइंग इन दिल्ली. They made their homes because the काम became so famous उनका तो था, and the credit goes to Magnificence for that because we used it. और इसी टाइम में हमने बहुत सारा लाख का काम किया. So explore that medium. I'll request all of you people here. I see Poonam Rastogi, I see Pyali Das Bishwas, Nilima Grover. If you are all designing something, like I'll request all the packers to be here on Wednesday so that we can talk regarding this. So लाख के काम के कारीगर आपको यहाँ पे दरियागंज के एरिया के अंदर मिलेंगे, आपको यहाँ पे पुरानी दिल्ली की तरफ मिलेंगे. अगर आप चांदनी चौक में जाएं, जो लोग पैकिंग बेचते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, एंड यू कैन बी इन टच विद देम, दे विल आल्सो मेक. सो देयर इज अ बेस ऑफ अ क्ले, यू कैन पेस्ट एनीथिंग ऑन टू इट, और वो बिल्कुल मजबूती से चिपक जाता है, निकलता नहीं है. Scope of textures are enough. There is something called, bajri. There is something called, golden powder. There is chumki. तो जैसे भी आपको finishes चाहिए वो finishes आप करा सकते हैं. The kind of designs you are looking at. And अगर आप be with me, any kind of questions you want to ask, please do. We have 3 Instagram handles. One is at Mapp. That is our academy where we train professional packers. और हमारा professional packaging का course जुलाई में दोबारा शुरू होने वाला है, and whoever is keen can come. Then is Shalini Beriwal, where we talk about education, life, book reading, spirituality, ultimate secrets of successful women. That's our business coach. You want to ask something there, you can go. But if you want to ask questions regarding any of the art form which we are using at Magnificence and any of the Instagram pictures, please DM me there. So in my next Instagram, when I'll go StreamYard live, I'll answer your questions. So thank you so much for all of you for being here, for encouraging me. This keeps me going. Archana Churoria says it's beautiful. Thank you so much. Gunjan, hi, how are you? So thank you for being there, and so many insights into packing profession. So packing is not a profession reality. It's a life. It's a life. It's a life of your own. It's a life of a karigar, and you add immense value to your customer. आप कहेंगे कस्टमर की जिंदगी में मैं इमेंस वैल्यू कैसे देती हूँ? सो दीप्ति, रीता, हम कस्टमर की जिंदगी में इमेंस वैल्यू देते हैं उसके फेस्टिवल को खूबसूरत बना के, उसके पर्सनल फंक्शंस को सुंदर बना के. एंड इट्स नॉट ओनली द वेडिंग, ऑल सेलिब्रेशंस. Due to designers into gift packaging industry, all these functions becomes beautiful. I always say, हम लोग भगवान के special children हैं. We are God's special children. Every time my phone rings, there is some happy moment happening somewhere during Corona or anywhere, anytime.
every time my phone called up, there was some fantastic happy moment was taking place. So three cheers to all the designing packers, all the designers who specially work with artisans, who specially work with Indian craftsmen. Thank you so much for being in this space and bringing your country to the international level. Thank you so much. So see you again next Wednesday, and we are going to talk about bandish. We are going to talk about a unique art of beads and going to tie it up. So be with me again at 5 o'clock next Wednesday. Thank you so much. I love you all. Be with me. Thank you